Right? As we know, the youth is the most active part of our country, and the role of youth in the nation building is more important than you might think. Youth should contribute to the nation by doing useful things in different sectors like education, health, technology, or etc. And I think India can be developed in many sectors like technology, education, health, or more things at less period of time. If educated person lead our nation or society, we can easily achieve our target in an effective way. Let me know one thing. In our India, there are 539 members of parliament. And out of them, 145 members have registered. And 122 have registered serious criminal cases. How can we expect from his side or he or she can do for best our nation or our society? No doubt there are a lot of good politicians are here, like RK Singh, Sachin Pilot, and many others. That is not enough for our India because we are the second largest population in the world. That is 138 crore. That is not enough for me, not enough for our society or our India. So I think if you want to see India as a developed country, we must be participating in politics. That's all from my side. Thank you. क्या रिव्यू है? Sorry? Okay, what about the content? Were you able to understand the content? समझ में आया सबको? कोई मुझे समझा सकता है? Yes, that I know. And many cases also. 140, I think 140 cases are lost. How in a democratic country we can think about the transparency between politicians and citizens? See, basically the motive was to create you can say a preferable option. Okay, basically अभी आपके पास जो भी choices हैं politics में, they are you have to choose the lesser evil. That means जो कम खराब है आपको उनमें से choose करना पड़ता है. But you have a choice between a good candidate and the best candidate. That will be a better choice, right? आपको अगर अच्छे कैंडिडेट्स में से सबसे अच्छा चुनना हो वो ज्यादा बेटर चॉइस है या बुरे में से सबसे बुरा चुनना हो वो अच्छा चॉइस है. That is what is the contribution of youth in politics, because you are the one who will be creating the options. If you go in politics or if you are supporting someone, you will be the one creating those options to choose the lesser evil or choose the best out of good. Okay. Yes, please sit down. Delivery style में कोई दिक्कत आप लोग को लग रही? नहीं. Okay. आपकी लास्ट स्पीच से आपको क्या इम्प्रूवमेंट लग रहा है अपने में? Okay, your confidence level has increased. Okay. Since confidence level increase हो गया है, अब आपको अपने डिलीवरी स्टाइल पे फोकस करना है. कैसे फोकस करना है? जब आप सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट? Since it is a very powerful topic you have chosen. Youth in politics is a very powerful topic for any country. तो वो पावरफुल टॉपिक आपकी वॉइस से भी पता चलना चाहिए कि यू आर मोटिवेटिंग समवन, राइट? आपने जब मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी होंगी तो आपने सुने होंगे जो स्पीकर होते हैं उनकी वॉइसेस में वेरिएशंस आता है. समटाइम्स दे टॉक वेरी लाउडली एंड समटाइम्स दे टॉक वेरी लाइक अ विस्पर, राइट? तो वो वेरिएशंस क्यों आते हैं? Yes, they are attaching the emotion, or if they are not attaching their own emotions, they are attracting your emotions, the audience's emotions. They want you to get emotional enough to get attention in this topic. They want you to believe in their topic so that they can
get you to do something about it. That is what a motivational is. Motivational speeches क्यों होती हैं? ताकि वो आपकी attention grab करके आपसे वो topic के ऊपर अपना राय बदलवा सके, या फिर आपको सोचने पे मजबूर किया जा सके कि जो टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो आम चीज नहीं है, आपको उसके बारे में सोचना है. So when you're giving a motivational speech, you have to gain that variation. Okay, work on that. Since your confidence is you say that it is better, तो मैं आप पे विश्वास कर रही हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है. अब आपको काम करना है अपने डिलीवरी स्टाइल पे. ओके ओके, सिट डाउन. यस, लॉग इन कर चुके हैं संदीप कुमार. बच्चे अभी परमिशन दे रही हूँ बिकॉज यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, अदरवाइज यू हैव टू राइट योर रोल नंबर. ठीक है, यहाँ पर संदीप कुमार के आगे या पीछे रोल नंबर लगाना है अपना. ठीक है, चाहिए. कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए. Hello my friends, my name is Sandeep Kumar. I belong to Motihari. I want to say something about pollution. In the climate changes that occurring caused by the problem of human, it's called pollution. Pollution is very dangerous for any person. Cannot keep the area clean, that's cause increase the pollution. And any illness can be caused from increase in the pollution. Pollution is very dangerous for climate. We use the polythene, again throw a pen pellets, which increases pollution. Again, near us by not cleaning, it share also which increase pollution. The source of pollution, polythene, wastewater, waste food, and wood, etc. The pollution increase we cause in village out area, palace to the toilet, in open palace. So we should accept the order of government and we should clean near us area, and waste required be kept in a state palace and we should cleanse it. Thank you. सॉरी, अच्छा आई कांटेक्ट नहीं था. हाँ, ईटीसी बच्चे बोलना नहीं होता है. जब आप ईटीसी लिखते हैं ना, ईटीसी लिखेंगे बट बोलते टाइम एक्सेट्रा बोलेंगे. ठीक है, एनीवन एल्स? और कोई? अच्छा, आई कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज यू आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डिलीवरिंग दिस स्पीच. ठीक है, आपका मेन ध्यान यहीं पर है कि जो लिखा है वो अच्छे से बोल दें, फिर उसके बाद चले जाएं. तो वो चीज डेवलप करनी है, उससे आगे बढ़ना है. ठीक है, आप कंटेंट देना चाहते हैं वो बहुत अच्छी बात है, बट कंटेंट देने के अलावा आपको आई कांटेक्ट रखना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि अभी तो आपकी स्पीच छोटी मोटी है, बट आगे अगर प्रेजेंटेशन देंगे या कोई बड़ी स्पीच अगर आप कहीं जाके देते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम आप समझ लीजिए कि 2 से 3 मिनट सबसे मिनिमम होगा. 5 मिनट 10 मिनट की स्पीच आपको, कभी कभी आधे घंटे की स्पीचेस देते हैं कुछ लोग. डायरेक्टर सर का स्पीच सुना ना आपने, 2 घंटे तक वो स्पीच देते हैं. हाउ कैन यू गेट द एनर्जी अगर आप अभी बोल नहीं पा रहे हैं? ठीक है, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव करनी है कि दैट एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स यू आर एबल टू गेट द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. 1 minute. Online students want to deliver today. Yes, you can unmute yourself. सूरज कुमार या फिर अच्छा, दोनों ही सूरज कुमार हैं? यस मैम. वो क्लास में प्रेजेंट है या ऑनलाइन है? यस मैम, ऑनलाइन. ऑनलाइन है. तो दोनों में से कोई अच्छा, रोल नंबर 13 पहले दे दे, देन उसके बाद जो दूसरे सूरज हैं वो तब दे देंगे. 64 में. हाँ, कैन आई मैम? यस, रोल नंबर 13 स्टार्ट करेंगे. Respected ma'am and all my dear friends, good afternoon to everyone. Login Today I want to deliver the topic social media.
I choose this topic because, as we know about the influence of social media, getting popular day by day. नहीं सुनाई देगा कभी. Hello. Yes, you are audible to me. As we know, there are so many social media platforms such as Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. First of all, we have to know about what is social media and why it's getting too much popular day by day. As we know that social media is a type of network to connect everyone from anywhere. Nowadays, it's getting much usable and popular. As we have seen in this COVID-19 pandemic, every institution or in business purpose, the social media play a very vital role. Thanks, ma'am. Okay. At least the online students were able to hear, right? तो जिन्होंने सुना वो अपना रिव्यू दे सकते हैं. सॉरी, टॉपिक इनका था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया. आप जाकर स्टार्ट कर लियो, वो नोटिफिकेशन चल रही है. अच्छा, फर्स्ट थिंग, सिंस दे आर एट द होम सो दे आर मोर कंफर्टेबल, राइट? तो उनको वो नर्वसनेस नहीं होगी जो यहाँ आने वालों को होती है, राइट? तो उनको नहीं पता कि यहाँ के कितना नर्वसनेस होता है, सो दे आर मच कंफर्टेबल एट होम, तो उनको वो वाली नर्वसनेस नहीं है. अभी उनको नर्वसनेस क्या है कि whatever content he or she is written वो सही है कि नहीं, कुछ गलती हो जाए नहीं, ठीक है? That is why they are more prone to read all the things that they have written, ठीक है? तो वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से आप रीड कर रहे हैं, सूरज. ओके, तो आपको करना क्या है, आपने जो लिखा है, ठीक है, उसको एज अ कॉन्वर्सेशन, जैसे आप बात करते हैं ना किसी से, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो आपको देख रही हूँ, स्टूडेंट्स को देखती हूँ, तो जैसे बात कर रहे हैं उस तरह से यू हैव टू लुक, ठीक है? आपको देखना है स्क्रीन पे कि व्हाट द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग और नॉट, टीचर लिसन कर रही है या नहीं, ठीक है? तो आई कांटेक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू गेट टू नो कि आपकी ऑडियंस सुन रही है या नहीं. ओके, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छे से फ्लुएंट रहिएगा, 2-3 बार रीड करिएगा, उसके बाद डिलीवर करिए स्पीच, ठीक है? ओके मैम. ओके, यस, अनदर सूरज, आप डिलीवर कर सकते हैं अपना स्पीच. Good afternoon, respected teacher and my dear friends. I am here today to speak a few words about Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam needs no introduction. He is not just a name but a feeling. His full name was Abul Pakir Jainullabbdin Abdul Kalam. Mr. Kalam was born on 15th October 1931 in Rameswaram in Tamil Nadu. He was born in an average family and the boy became the 11th president of India. Apart from a president, he was also a great scientist because of his work in the field of science, especially missile and rockets. He is also called the Missile Man of India. He worked with organizations like DRDO and ISRO. He was a real gem of India. Thank you, ma'am. Okay, yes. Anyone who would like to give them feedback? इनको कोई फीडबैक देना चाहता है? Yes, first thing, सूरज, आप पढ़ रहे थे स्पीच अगेन? Yes, ma'am. तो पढ़ना नहीं है, ठीक है? डिलीवर करना है. इसका क्या मतलब होता है, आप स्पीच जब भी बोलेंगे तो जैसे आप बात करते हैं उसी फ्लुएंसी में आनी चाहिए आपकी स्पीच, ठीक है? तो उसके ऊपर वर्क करिए, ठीक है? ओके. यस, प्रिंस, आप डिलीवर करना चाहते हैं? Yes, ma'am. Yes, you can go ahead. Hello everyone, myself Prince and I am from Hajipur, Vaishali.
Today I'll talk about cryptocurrency. So cryptocurrency is invented in 2009 by Satoshi Nakamoto, and the cryptocurrency is type of money that is uses digital files as money. Usually the files are same as cryptography, and the cryptography is the science of hiding information. Digital signatures can be used to keep transactions safe and let the other people transactions are real. There are different types of cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Litecoin, etc. I think we all know about Bitcoin is the oldest and popular cryptocurrency. Okay, now we will talk about how it works. So cryptocurrency works using a technology called blockchain. Blockchain is a decentralized technology spread across many computers that manage records and technologies. One thing you must be thinking about what we use cryptocurrency over our Indian rupees. So cryptocurrency allow for secure payments and secure online payments and limited by ledger entries in the system. That's all. Thank you. Okay, yes, there was some network issues, तो आपका बीच में रुक गया था, but it's okay. Rest of the speech was okay. ठीक है, आपको क्या काम करना है? You have to deliver at least 2 or 3 times, and before delivering you have to read the speech इन जोर जोर से बोलने की कोशिश करिए, तभी आपका वो फ्लुएंसी जो है वो ठीक होगा. ठीक है, पहले आप पढ़ेंगे स्पीच को जोर जोर से 5-6 बार, तब आप फिर उसके बाद जब डिलीवर करेंगे तब थोड़ा कंटिन्यूअस फ्लो आएगा. ओके ओके, एनीवन एल्स? Anyone else in the online mode who would like to deliver a speech? Okay, yes. Offline students, yes, please come. उनके बाद चले जाइएगा, उसके बाद आप. ठीक है, नहीं वो लॉगिन अनम्यूट नहीं किया है मैंने सबको, आप अपने से अनम्यूट कर सकते हैं. दैट हैड Everyone, I'm Khushbu Kumari. Today I'm here to share my experience on COVID-19 lockdown and unlock for students. During this lockdown, as being a student, we all feel advantage and disadvantage too in our life. Because our schools are closed, I feel advantages. So we enjoy all the day with playing games, watching movie from the morning to the night. But at once, an instant of time, I feel bored. I am waiting for unlocking the situation to meet my friends and families, relatives, my loved ones. Slowly, school start teaching online because situation is not still settled. Initially, online class feel better because not for study, only for bunking the class. Thank you. नहीं, वो दैट इज नॉट सम फीडबैक, दैट इज एवरीवन नोस. ठीक है, आपकी क्या फीडबैक है ऑन द डिलीवरी स्टाइल एंड द कंटेंट? कंटेंट कैसा पड़ा था ये बताइए. व्हाट अबाउट द कंटेंट? अच्छा था, मतलब क्या? ओके, तो
कंटेंट ओके, वो कंटेंट ठीक है जो यू हैव एक्सप्लेन्ड इट, दैट वाज ऑल राइट. आई वाज आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट. स्ट्रक्चर कैसा था कंटेंट का? नहीं पता. सॉरी, एडवाइजरी? नहीं, वो मैं नहीं बोल रही हूँ. आई एम टेलिंग यू अबाउट द कंटेंट स्ट्रक्चर, मतलब कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. नहीं था, कंक्लूजन बोला ही नहीं. अच्छा ठीक है. नो, द थिंग इज कि जरूरी नहीं है कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक इन द स्टार्टिंग. ठीक है, आप उससे पहले भी एक स्टोरी शेयर कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, राइट? मैंने पहले बताया था नहीं, देर आर 4 to 5 ways in which you can introduce your topic. It is not necessary that you will start speaking that today my speech topic is this. नहीं, you can introduce it via you can say a story. ठीक है, स्टोरी के थ्रू आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इफ यू आर लाइक से जो उनका टॉपिक था द एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट इन कोविड सिचुएशन, तो वो उसके लिए आप जो स्टोरी आप बता रहे थे, वो स्टोरी बताने के बाद या फिर वो स्टोरी के बीच में आप ये बोल सकते थे दिस वाज द सिचुएशन of every student or most of the student during COVID situation. So this was the introduction which was required. That is enough. और you can say अगर आप कोई ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जहां पर you can say a very emotional topic है या controversial topic है, तो उसमें you can introduce with some poetry or quotations. Quotations पता है सबको? Yes, you can use quotations to introduce. और if you are introducing some leader, अगर आप मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जो इन्होंने स्पीच दी, उनके बारे में अगर आप स्पीच देने चाहते हैं या उन जैसे किसी लीडर के बारे में आप स्पीच देना चाहते हैं, उनकी कही गई कोई बात को आप रिपीट कर सकते हैं इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. एंडिंग आप कर ही सकते हैं उससे, दैट इज ऑल राइट. इंट्रोडक्शन भी आप उससे कर सकते हैं. ठीक है, कि आपने कोई 2 लाइन या 4 लाइन उनके बारे में मतलब उन्होंने जो लाइन बोली वो आपने रिपीट कर लिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट दैट दीज फेमस लाइंस वर सेड बाय आवर फेवरेट लीडर एपीजे अब्दुल कलाम. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा आके यहाँ पर बोल दें कि दिस इज माई टॉपिक फॉर द स्पीच टूडे. ये नेसेसरी नहीं है. ठीक है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर विच यूजुअली वो लोग मैंने अभी अटेम्प्ट करने दिया बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव like not deliver speech before this, right? तो इसीलिए that is why I'm allowing you to give this content. ठीक है, otherwise when you get practice enough, अगर आप in future कभी presentation deliver करना चाहते हैं, presentation में तो it is okay if you are not using anything informal because presentation आपकी technical subjects पे रहेंगी. But if you are giving speech on 15 अगस्त या फिर आप 26 जनवरी पे speech दे रहे हैं, तो in that kind of situation try to get it more involved. ठीक है, उसमें आपको सिर्फ डाटा नहीं देना है because most of the people know about everything what you are saying. So it is better to introduce something that is new so that your audience grab the idea that you are like आपको कुछ नया बोलना है तो वो audience को पता चलना चाहिए within 1 minute. ठीक है, within 1 minute of your speech. It is very crucial time. अगर 1 मिनट के अंदर आपकी audience का वो कैप्चर नहीं कर पाए आप अटेंशन, तो फिर बाद में आप कितना भी इंटरेस्टिंग स्पीच दे लो वो नहीं सुनेंगे. आधे बच्चे यही सोच के, आधे जो आपके ऑडियंस होगी वो यही सोच के बैठ जाएंगे कि ये कुछ अच्छा नहीं बोल रहा है, जो सुना हुआ है वही चीज सुना रहा है दोबारा से. तो टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन यू कैन यूज इन योर स्पीच. इंट्रोडक्शन के इतने टाइप्स इसीलिए हैं बिकॉज starting of your speech is very important to grab your attention of the audience. Okay, okay, anyone else? Yes. हाँ, it should be related to your topic. Yes, you can see anything related to your topic that might caught interest to your audience. Hello everyone, a warm welcome to all of you. Today I am here to deliver a speech on waste management in India.
Waste management has become a major issue for many years, and since the era of industrialization in the time to time. The problem has evolved from time to time. The gases from these unwanted waste are very harmful to the atmosphere, causing air pollution, which leads many people suffering from respiratory problems. This unmanaged waste is one of the causes of global warming. The poor state of waste management is known to all of us. There are hardly any places in the country that uses the correct waste disposal system. Unmanaged waste that is not properly disposed gives to birth of various disease and emissions. There are many ways of disposing waste correctly, and they are not harmful to the environment. Such methods are just like recycling, the using of discarded items, landfill, plasma gas classification, composing waste extract. If we want to do something about global warming, then this is the way to help as well. Now it's time for us to do something about the waste management. The new waste disposal machinery and technology focused on municipalities should be created. That's all. Thanks. Give them feedback. Fluency अच्छा था. Okay. See, if your audience is saying that you are good, that means you are good. Take them for their word because they are the one listening. अगर वो कह रहे हैं कि बोर हो गए, then you have to work. If they are saying that your speech was good, then you have to take their words because ultimately they are the one who are listening. ठीक है? Okay. Anyone else? Yes. You want to deliver a speech? Yes. Yes. अच्छा उनके बात you can go. Yes. Yes. I have said him already. हाँ? अच्छा you have given for correction. तब कैसे दोगे फिर? अभी जो मैं करेक्शन करके देती हूँ, this is for the next class. ठीक है? So that you get enough time to practice it. ठीक है? क्योंकि अभी जो आपने स्पीच लिखी उसको प्रैक्टिस कर चुके होगे. And right now, even by after the correction, if you try and go speak there, आप गलत ही बोलोगे. ठीक है? So it is better to give it one go of practice before coming up here. हाँ, that's okay. Good afternoon to everyone. I am Akanksha, and today my speech topic is global warming. We all are aware of the term global warming. We must have heard about it in school textbooks or in newspaper. In simple terms, global warming is a phenomenon in which the average temperature of the Earth is increasing divided. A rise in global temperature of the Earth causes out the greenhouse gases into the atmosphere, caused by human activities and inventions. The greenhouse gases basically consist of carbon dioxide, nitrous oxide, methane, and ozone gases are the major contributors which impact the sunlight and radiation in our atmosphere. The primary causes for the heat-trapping gases released are burning fossil fuels, deforestation, industrialization, mining, overexploitation of natural resources, etc. Global warming has badly affected the natural environment of our planet. It has affected both the flora and fauna of Earth. With the increase in temperature and this current ecosystem, a lot of species are on the verge of extinction. The global climate change has also affected the human health, economy, and geopolitical balances to great extent. Melting of icebergs of polar regions are causing the increase in rise of sea level at an unexpected rate, which has put us to rise. India, being a developing country with the second largest population in the world, is emerging as one of the significant contributors to the emissions.
India is the world's third largest emitter of greenhouse gases. There are several policies adopted on country level as well as the global level for all the countries to tackle this problem. There are some easy steps that, if followed regularly by us, can bring positive changes, like turn off electric devices if not in use, buy energy-efficient appliances, and replace single-use plastic, use public transport, drive less and safe routes, conserve water, and protect our water bowls, plant more and more trees, recycle more, etc. Optimum household electricity can reduce the fossil fuel burning. Using public transport can reduce the vehicular emissions. Recycling reduce energy consumption. And planting trees will have an impact on reducing the emissions. Let's step forward to preserve the beauty of the planet. Let's please to save and restore the natural beauty of the earth. That's all I have to say. Thank you. So your feedback. Sorry. What about the content? What was the conclusion? How to protect our बच्चे वही तो होगा ना. If the speech is on that, तो वही तो होगा. But I'm asking कि what she exactly gave for the conclusion. Also, what exactly the youth of India can do for the pollution? Sorry. My conclusion was how much small steps can bring big changes. No, those small changes was for everyone. What exactly the youth of our country or any other country, the exact youth, because you are the future. So what you can do to reduce pollution? What is your own steps that you will be taking? Electronics device नहीं, electronics device का use कम कर दोगे कैसे? Think something that is possible. ठीक है. First thing जो electronics devices हैं, ठीक है. E-waste जो है, every day people are buying mobile phones, portable devices, pen drives, Bluetooth headphones. ठीक है. Every day people are buying new electronic devices. Obviously the waste will be produced. What you can do is how can you convert that waste into something useful or something that won't be causing any effect on the environment. उसके बारे में सोचिए. Because most of the students here are either from the IT background or from the management background. आप बना सकते हैं और आप बेच सकते हैं. तो दिमाग लगाइए. Yes, the speech was very nice and your consistency was also good. Okay, very good. Yes. हाँ, वही चीज, वही consistency होनी चाहिए ना, तभी तो audience को समझ में आएगा. Okay, only 1 minute is left, so let me just take the attendance.